कर लिया जाए. So the thing is, market structures के अंदर up until 2023 onwards, there's not many questions that you can. It's in there are questions, लेकिन आपके relevancy के हिसाब से जो questions हैं वो इतने नहीं हैं इस वक्त. But luckily for us, एक question ये वाला जो आया हुआ है जून 24 के अंदर, variant 42, so it was our variant, um, जिसमें I think they've done a very good job in structuring the question, जिसके अंदर उन्होंने काफी सारे concepts को एक साथ पैक किया है. So just to remind you how the answers are written, 20 mark के अंदर you have to first, for 14 marks, give a little assessment objective 1 and 2, which is knowledge and understanding, along with the analysis. And we want to score somewhere near 14 marks for this. And then you have assessment objective 2, जो कि evaluation है, and we want to score somewhere near 6 marks for it, and you get yourself 20 marks. I've told you before also, there is level 1, level 2, and level 3 in which you get the marks. It can be from 1 to 5 for level 1, 6 to 10 for level 2, and 11 to 14 for level 3. और फिर इवैल्यूएशन के अंदर यू हैव लेवल 1 एंड लेवल 2, जिसमें 1 से 3 मार्क आपको मिल सकते हैं इधर, और 4 से 6 मार्क्स मिल सकते हैं आपको इधर. सो लाइक आई said before also, Dekhenji, for every answer, you need to have a good um, theory, a good structure, and very good clean diagrams, relevant diagrams. The way I would see is कि एक बच्चे को to qualify for a level 3 marks for analysis and knowledge, a few things is, एक तो ये जो इन्होंने एक्सेस प्रॉफिट जिसको इन्होंने कहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट, there should be a clear understanding of what it is in comparison to maybe normal profit. ठीक है. दूसरी चीज, a student needs to really clarify कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इवेंचुअली क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना नेसेसरी है, बिकॉज रिमेंबर द की वर्ड ओवर हियर इज इट नेसेसरी फॉर द फर्म्स, राइट? सो वो नेसेसरी की बात हमने करनी है. और ऑब्वियसली देन वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट मोनोपोली. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन, evaluate with the help of diagrams whether excess profit, yani supernormal profit, is always necessary for the continued existence of firms in perfect competition and monopoly. Now, इसको पढ़ते के साथ ही मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं. My conclusion, analysis and conclusion basically, कि perfect competition short run में abnormal profits कमाता है, लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है, और वो शॉर्ट रन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हुए भी लॉन्ग रन में एग्जिस्ट कर सकता है. तो दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन को तो जरूरी नहीं है सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने की. अगर वो कमाता है तो वेल एंड गुड. लॉन्ग रन के अंदर दे डोंट हैव द कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द बैरियर्स, देयर नो बैरियर्स. लेकिन एज फार एज मोनोपली गोज, मोनोपली का हमने देखा है कि शॉर्ट रन हो कि लॉन्ग रन हो, दे कैन मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. बट द की क्वेश्चन इज, क्या नेसेसरी है फॉर देम मोनोपली के लिए? सो परफेक्ट कंपटीशन में तो नहीं है, लेकिन मोनोपली के केस में आई माइट से दैट इट मे बी नेसेसरी, इट मे नॉट बी नेसेसरी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू आंसर, राइट? तो सबसे पहले जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा उसके अंदर, I think this is how the best start would be. Knowledge and understanding, we want to give as much as we can. So we'll start off with a simple perfect competition के अंदर क्या होता है, and perfectly competitive firm के केस में क्या हो सकता है. So I would start something like with the little features के
perfect competition के लिए I'm just going to use PC. Perfect competition के कुछ features I would like to underline. ठीक है? A few things is please. So I'm going to do a little bit in the point form. You can do it in the paragraph form. आप एक paragraph के अंदर सारे features लिख सकते हैं. It's up to you. One of the feature in perfect competition is that there are many small firms producing an identical good. Okay, so there are many small firms which are producing identical goods. If you remember, we said कि identical, similar, homogeneous product. Many small firms की भी मैं और further बात भी कर सकता हूँ इसके ऊपर. Because remember, what we've been saying is कि ये जो small firms होती हैं, what I mean by that is that all these firms have the same technology. Okay, they all have the same technology. They all have pretty much the same cost structure. ठीक है? And they pretty much have same insignificant market share. So yes, this is what I mean by many small firms and what is the idea about these small firms. And also about the identical, that means the product they're making is homogeneous, which means nobody has any advantage or unique selling point. Now, obviously, we know that that's not how it works in reality, but over here, we would like to assume this. Another feature that we would want to say is there are no barriers to entry of new firms. Also, no barriers to exit for existing firms. यानी जिसको मार्केट के अंदर आना है वो आ सकता है, जिसको मार्केट छोड़ के जाना है वो जा सकता है, किसी को किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, is what you have to mention. फिर उसके बाद another one that we can talk about is that there is perfect knowledge. Okay, there is perfect knowledge. Yeah, even we write perfect information about price. Sorry, about price. कंज्यूमर्स को भी पता है ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है. Producers also know who all is selling, what is the consumer interested in paying. So there is no absolutely misinformation about anything like this. So you will have to charge whatever the market tells you. तो जब हम एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, अच्छा ऑल्सो रिमेंबर वी डू से that perfectly competitive firms are price takers, meaning that the industry uses demand and supply forces to determine the market price. अब वो जो भी मार्केट प्राइस डिटरमिन की है इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई ने, now that is what these firms will basically take in. Now if you want you can make those diagrams. I'll make the diagrams a little later. फिर what I was thinking was कि मैं फिर इस point के बाद
I would like to go and talk a little bit about monopoly. Okay, कि कुछ मोनोपोली के फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब जहां तक बात है मोनोपोली की, sorry, so let's talk a bit about monopoly and what we need to write in case of monopolies. अब जहां तक मोनोपोली के फीचर्स हैं, जो ऊपर हमने फीचर्स लिखे हैं ना, यू कैन यूज सिमिलर फीचर्स, राइट? लेकिन एक बात तो हमें पता है मोनोपोली के अंदर, दैट देयर इज अ सिंगल seller of the good. Okay, it has majority market power. ठीक है। जो प्रोडक्ट है, the product is unique. Okay, nobody else is selling. That means we're saying something like that there is no close substitute, right? So that's what we basically mean, कि वो एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है खास इसके। फिर उसके अलावा monopoly is our price maker. They will decide their own prices, and we're going to see that there are high, yes, significant barriers to entry and exit for existing firms. There is imperfect knowledge or information. कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कितने का मिल रहा है, कंज्यूमर इज नॉट सो क्लियर अबाउट इट। तो थोड़े से आपने इस तरह से ये फीचर्स दे दिए। Once you have done this, I think there is another terminology that I feel we should explain. I don't know if it's there in the marking scheme or not, but I think we should talk about this super normal profit. Let's call it SNP, supernormal profit, also known as abnormal profit. Basically, ये है क्या supernormal profit? So if you know, we've talked about this in chapter 4, revenue and profit theory. You can go and take a look. So the first thing we can say about supernormal profit is that it is the profits earned above normal profit. Honestly, I feel कि मैंने एक वेग टर्म से दूसरा वेग टर्म लिख दिया है। So what I'll do is, this is where total revenue is greater than total cost, and total cost includes both explicit, yani direct costs, explicit costs, and implicit costs. And implicit cost के अंदर, I think we should mention, I'm talking about opportunity costs, right? So I think that would be an important thing that one needs to talk about, कि ये आपका जो है super normal profits हो जाएंगे। ठीक है। यूजुअली बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी से इज कि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, यूजुअली, ऑलराइट, सो आई आई विल मेंशन दिस ओवर हियर, पर देख लेते हैं। Normal profits is the minimum. बल्कि in fact, I would say कि ये usual भी नहीं है, it is important. Because why would a firm operate? इसको मैं short run long run से कर देता हूँ. Why would a firm operate if it's making economic losses? They should leave the industry, especially if it's easy to leave. Perfect competition में तो definitely. But even monopoly would not want to stick around, right? If they're not making short run, maybe they might, but in the long run, they really need to at least make a normal profit. Otherwise, they might want to move to something else. So I will write that required
to keep a firm in business in the long run? ठीक है, सो लॉन्ग रन में आपका एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों आना चाहिए, वरना आप बोलेंगे यार ये काम करने का फायदा ही नहीं है अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लॉस हो रहा है एंड आई कुड हैव मेड मोर मनी समवेयर एल्स. सो आई विल डेफिनेटली मूव माय रिसोर्सेज समवेयर एल्स. Okay. Now the question is really about should you yeah, your understanding whether abnormal profit is necessary for survival. So obviously we need to talk in terms of the short run and the long run. So this is how we will go about it. Diagram, we can start, but I'll go with my analysis something like this. So I'm starting my analysis basically. I've explained the terms. Now let's link them. Okay. So one thing is in short run, perfectly competitive firms can earn supernormal, normal, and subnormal भी होता है और economic loss भी होता है, economic loss. Okay. Now, this is the diagram which I feel is a good one because question is about subnormal profits. So I'll make a short run and a long run scenario where I will make both my diagrams. I will make my industry का diagram and I will make a single firm का diagram. Okay. इंडस्ट्री के डायग्राम के अंदर आई डू डिमांड एंड सप्लाई. ये पूरा मार्केट का डिमांड है, मार्केट का सप्लाई है, मार्केट की क्वांटिटी है एंड मार्केट टेलिंग अस व्हाट द प्राइस इज. अब जहां तक सिंगल फर्म है, द सिंगल फर्म इज गोइंग टू टेक द प्राइस गिवन बाय द इंडस्ट्री. And in chapter 4, we've seen that demand AR, MR equals to price. It's all the same. Now, firm will have its own marginal cost and ये equilibrium point है और ये profit maximizing point है. अब मैं ये दिखाऊंगा कि एक firm abnormal profit कमा रही है. Abnormal profit के लिए it needs to be slightly on the lower side. Okay. And my abnormal profit is right here. This is per unit abnormal profit. And this basically becomes my total abnormal profit. Do you understand? A single firm is making an abnormal profit as of right now. मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले मैं इंडस्ट्री के डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा. दैट डिमांड एंड सप्लाई हैज डिटरमिन्ड ए मार्केट प्राइस विच इज P0. और जो एक सिंगल फर्म है उसने, बिकॉज हमने पहले ही बोला है कि क्योंकि वो प्राइस टेकर है तो उसका जो प्राइस है वो बेसिकली उसका डिमांड कर्व है. ठीक हो गया. फिर मैं कहूंगा कि एक जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, जो कि हमेशा हमारी कंडीशन होती है, तो इट विल प्रोड्यूस वेयर P इज इक्वल्स टू MC. ओके. एट QO. और उस जगह के ऊपर अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो वी कैन क्लियरली सी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. और हमने शेड करके भी दिखा दिया है दैट इट इज द शेडेड रीजन.
ओके। अब लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो ये लॉन्ग रन में तो सस्टेनेबल नहीं है। ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन आएगा, और जब कंपटीशन आएगा मार्केट के अंदर, तो उस कंपटीशन के आने की वजह से ये जो सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व राइट पे जाना शुरू कर देगा। और ये कब तक राइट पे जाएगा? बिकॉज रिमेंबर, जब जब ये कर्व राइट पे जाएगा, तो आपकी जो मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो यहां से बेसिकली स्टैब्लिश हो रही है, ये आपका डिमांड कर्व बेसिकली, तो ये कब तक होगा? जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाता। ये स्लाइटली ओवर हियर, तो मैंने ये मार्क करके दिखा दिया कि देखें जी, क्योंकि नो बैरियर्स टू एंट्री है, तो न्यू फर्म्स विल एंटर, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई बढ़ेगी और उसकी वजह से प्राइसेस गिरेंगी। और जब वो प्राइसेस गिरेंगी, तो जो सिंगल फर्म है उसके लिए भी डिमांड कर्व नीचे गिरेगा। और जब नीचे गिरेगा डिमांड कर्व, तो उसका P इक्वल्स टू MC की कंडीशन अब यहां हो जाएगी एट Q1। सिंगल फर्म का डिमांड कर्व नीचे गिरेगा, प्राइस नीचे गिरेगी, वो कम क्वांटिटी बनाएगी और वो नॉर्मल प्रॉफिट करेगी। दिस इज द डायग्राम विच इज रिक्वायर्ड, इट इज अ मस्ट राइट दैट फर्स्ट क्या हो रहा था, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड दैट वुड बी माई कंटिन्यूएशन। So let me do that for a second. फिर मैं क्या लिखूंगा? So this is what I'm going to write after this point. इसकी explanation. So I'll say something like that. However, these profits, abnormal profits की बात हो रही है, are not sustainable in the long run. I think the screen has disconnected. One second. Right. I hope you can see the screen. I hope you can hear me. Sorry about that. So, so basically, this is what I was writing. Okay, after we've done our diagram, so we are required to write कि क्या होगा long run के अंदर, and that is what I was writing. That however, the profits are not sustainable in the long run. The assumption of free entry and exit allows new firms to enter the market when existing firms make abnormal profit। ठीक, सो ऑब्वियसली फिर उसके बाद क्या होगा?
supply will increase and shift to the right, causing price to fall, and demand curve for single firms to fall until AR is equals to AC and normal profits are made. So something like this. This is how we're going to talk about it. इसके अंदर अगर आपने efficiency को include करना है, be my guest, most welcome. You should add that. Um, so we're saying supply will increase, uh, causing prices to fall, and demand curve for single firm to fall until average revenue equals to average cost and normal profits are made. तो इस तरीके से जो है हमारा जो इंडस्ट्री का बेसिकली जो फर्म का एबनॉर्मल प्रॉफिट है दैट विल बेसिकली बिकम नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. Um, if you want, definitely you can. I think it's always a good idea to, when you're doing this, efficiency, allocative and productive efficiency की आप जरूर बात किया करें. It's an add-on to your answer. अगर आप देखें तो शॉर्ट रन के अंदर ये जो फर्म है, इफ यू लुक एट द ग्राफ, क्योंकि हम P इक्वल्स टू MC पे बना रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम एलोकेटिवली एफिशिएंट तो हैं. ठीक है. बट शॉर्ट रन के अंदर जब हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे तो हमारा मिनिमम एवरेज कॉस्ट वर नॉट एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट. सो हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं हैं, हम प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हैं. ठीक है. लेकिन लॉन्ग रन के अंदर P इक्वल्स टू MC भी है और मिनिमम एवरेज कॉस्ट भी है. तो वी हैव बोथ एलोकेटिव and productive efficiency. So we sort of like have both the efficiencies in the market. तो ये इस तरीके से जो है हम ये बात कर सकते हैं. It's always a good point to enter this. खास तौर पे तब जब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो ऑब्वियसली, लेकिन नहीं लिखा हुआ, इट्स परफेक्टली फाइन. यू कैन मूव ऑन. एंड ऊपर शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात करें, अभी तक हमने लिंक्स नहीं बनाए. इवेंचुअली लिंक्स भी बन सकते हैं, पर अभी के लिए आई थिंक दैट्स गुड इनफ एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स मोनोपोली. अब जहां तक मोनोपोली का केस है इन द एनालिसिस, सो हमें पता है मोनोपोली का, क्योंकि वो इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर आता है and they are the only ones selling the product in the market. तो सबसे पहली बात जो हमें उसके बारे में करनी चाहिए कि उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ठीक है. दैट मीन्स दे आर price makers. They can decide the price, but then the demand curve will tell them कि आप कितनी quantity बनाएंगे. If they decide on the quantity, then market will tell them कि आप क्या price charge करेंगे. So based on this, I'll make a diagram कि एक profit maximizing monopoly का abnormal profit किस तरीके से दिखेगा. So this will be my monopoly का diagram. Price, quantity. I'll just make a regular downward sloping demand curve, although one might say कि monopoly का जो है थोड़ा सा inelastic होना चाहिए. बना लो, inelastic बना लो. Honestly, there's no problem with that. MR curve बिल्कुल halfway होता है, half gradient होता है. MC इसका भी एक cost structure होगा, और फिर ये फर्म क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है तो ये MR इक्वल्स टू MC की बेसिस के ऊपर क्वांटिटी डिसाइड करेगी और फिर डिमांड कर्व बताएगी कि क्या प्राइस चार्ज करना है. फिर आप एक एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, क्योंकि मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाने जा रहा हूं तो दिस इज हाउ आई डू इट. मिनिमम ऑन मार्जिनल कॉस्ट. और फिर उसके बाद राइट ओवर हियर ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट इसका हमने दिखा दिया.
and then we can do sort of like an explanation of this कि ये abnormal profit किस तरीके से हो रहा है इसके अंदर. Profit maximizing firm will produce where, profit maximizing monopolist will produce where MR equals to MC, and the price they'll charge is P0, and quantity they'll produce is Q0. And since average revenue is greater than average cost, you can say that they are making abnormal profit. इस तरीके से आप इसकी explanation करेंगे. Uh, but let's not deviate so much, because remember what our intention of this question is. We want to have a discussion कि abnormal profit, is it necessary दोनों industries के अंदर, right? Eventually, we need to bring our answers to that. You can spend as much time as you can over here. Honestly, this is not like Fazul marks. This is almost like after 20 में से 10 marks is about all of this stuff that you're going to write. But then eventually you need to make the connection. So something like I would, say something like that. Yeah, like unlike, because comparison कर रहा हूँ. So unlike perfect competition, monopolies have barriers to entry and exit, ठीक है, and they can prevent new firms from coming into the industry. तो इस वजह से even in the long run, uh, they can maintain abnormal profit. ठीक है. So in short, अब इसको तुम जैसे भी लंबा करना चाहो, monopoly will continue to make abnormal profits because there are high barriers to entry and exit. So, you know, अब ये लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे, ये जो हाई एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, remember what do these companies do with these high abnormal profits, right? So if I want to bring in the efficiency का point, by the way, हम diagram के अंदर देख सकते हैं कि these firms are price ऊपर है, marginal cost नीचे है, तो ये allocatively inefficient भी है क्योंकि price is greater than marginal cost, and they are also not at minimum average cost. So ना ये productively efficient है और ना ये allocatively efficient है, तो ये दोनों तरीके से inefficient है. ठीक है. लेकिन one of the good things about monopoly is that they can actually achieve something called dynamic efficiency. Dynamic efficiency एक long run idea होता है जिसके अंदर आप अपने प्रॉफिट्स को बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट इनोवेशंस के अंदर, ऑटोमाइजेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसकी वजह से आज नहीं लेकिन इन द फ्यूचर यू आर एबल टू रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट. ठीक हो गया. सो आई कैन एक्चुअली से दैट कि that these profits can act as a source to dynamic efficiency, enabling firms to reinvest in research and development, innovation, and lower production costs over time. Okay. एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा,
राइट, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा लॉन्ग रन के अंदर और प्राइसेस भी गिरेंगी. uh but again, coming back to the question कि will they, is it necessary, will they continue? So what one of the things that I can say is that under what circumstances they might not be able to continue to make abnormal profits, right? So I would say something like that monopolies uh, may not earn continuous super normal profits if, say, demand falls or if regulation restricts prices. बाय द वे, ये जो आप अपनी मर्जी से एम आर इक्वल्स टू एमसी की बेसिस पे क्वांटिटी और डिमांड का उससे प्राइस निकाल रहे हैं, देर इज पॉसिबिलिटी समटाइम्स, खास तौर के ऊपर जब हम बात करते हैं नेचुरल मोनोपोलीज के केस के अंदर. अब होता यह है कि नेचुरल मोनोपोलीज बेसिकली दो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे यूटिलिटीज वाले हो गए, बिजली, पानी, गैस, जिसमें बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है बेसिकली, राइट. सो उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, है ना. सो बिकॉज दिस फर्म्स, इनका बहुत हैवी फिक्स कॉस्ट लगता है, इनको अपनी एवरेज कॉस्ट कम करने के लिए बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ती है. And sometimes they actually need to produce at normal profit so that they can minimize their average cost. और कभी कभार simply government इनको regulate करती है कि आप इतनी high prices नहीं ले सकते. तो natural monopolies such as utilities, large economies of scale means the firm might have to operate at regulated prices, earning only normal profit to prevent exploitation. because government पे exploitation लगा सकती है कि आप जो है लोगों का फायदा उठा रहे हैं वगैरह वगैरह. So this is something that we can talk about in the analysis. uh, फिर हम अपने इवैल्यूएशन के ऊपर मूव कर सकते हैं. इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं, क्या सुपर नॉर्मल profits are necessary or they not necessary, right? So हम ये बात कर रहे हैं कि super normal profits are not always necessary for firms' continued existence. जैसे in perfect competition, नॉर्मल प्रॉफिट आप कहते हैं बिल्कुल परफेक्टली सफिशिएंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म्स. जब तक फर्म्स अपनी सारी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर कर रहा है, दे कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड दे कैन मेक बिजनेस एंड दे कैन मेक बेसिक प्रॉफिट्स एंड इट विल बी परफेक्टली फाइन. हमें पता है कि उनके केस के अंदर अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन कमा रही है तो ये टेम्पररी है, बिकॉज नए एंट्रेंट्स आएंगे और वो बेसिकली उनका एबनॉर्मल प्रॉफिट स्टील कर लेंगे और फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर ही आ जाएगी. लेकिन जहां तक मोनोपलीज का केस है, मोनोपलीज के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कभी कभार काफी क्रूशल रोल प्ले करते हैं. वो इनोवेशन के पीछे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो इनोवेशंस नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि डायनामिक एफिशिएंसी इज एट द एंड ऑफ द डे रिक्वायर्ड. फार्मास्यूटिकल के अंदर भी जब फार्मास्यूटिकल्स एबनॉर्मल प्रॉफिट करती हैं तो वो अपने उस पैसे को नई रिसर्चेस के अंदर डालती हैं, पेटेंट्स के अंदर डालती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर डालती हैं. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी in these things, and once they've produced something worthwhile, then that allows them to recover all the money that they have spent. ठीक है.
लेकिन ऑन द अदर हैंड, नॉट ऑल मोनोपलीज यूज प्रॉफिट्स एफिशिएंटली। जरूरी तो नहीं है ना कि हर फर्म अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और वो उसको सही तरीके से यूज भी कर लेगी। कुछ फर्म्स जो हैं जिसको हम कहते हैं कि वो एक्स इनएफिशिएंसी की तरफ चली जाती हैं। एक्स इनएफिशिएंसी क्या होती है? कि वो बहुत ही वेस्टफुल रिसोर्स की यूजेज में चली जाती हैं, पैसे का सही एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि वो इतनी बड़े जायंट्स हो जाते हैं, मोनोपलीज हो जाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं। अब वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन सच केसेस supernormal profit is not a requirement for survival but rather a byproduct of मार्केट पावर। राइट, सो मैंने दो तरीके से ये बात कर ली है कि एक तरफ उनके लिए इम्पोर्टेंट है मोनोपलीज के लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना, क्योंकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट में जाते हैं, which help them with innovation, and if they don't innovate then what good is the firm। और दूसरी तरफ we've talked about कि किस तरह से those abnormal profits can be converted into inefficiencies। ठीक है, सो वो इनएफिशिएंसीज जो है वो यू नो किसी फायदे के लिए नहीं है। फर्म्स माइट कंटिन्यू टू सर्वाइव बट इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू इट। एडिशनली, जो आपकी नेचुरल मोनोपलीज है, दे मे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट while earning only normal profit, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और वो सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएं, लार्ज स्केल क्वांटिटी बनाएं, लो प्राइस के ऊपर लोगों को सेटिस्फाई करें। इफ यू डोंट डू इट then we're going to put a regulation on you, and that's not going to be for your advantage. So therefore, while supernormal profits can enhance long-term stability and innovation for some monopolies, they are not always necessary for a firm's survival। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने वैसे ही बोल दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट आप करते ही करते हैं लॉन्ग रन के अंदर, लेकिन मोनोपलीज के अंदर जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, क्योंकि बैरियर्स हैं, तो फर्म्स जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो कुछ समवेयर अलोंग दिस लाइन, आई नो आई हैव गिवन अ वेरी लॉन्ग sort of a discussion to summarize just for the evaluative purposes। पहली बात मैंने ये कहा कि perfect competition can continue to exist without abnormal profits, because in long run they will end up with normal profits. So as long as their average costs are getting covered, they are absolutely okay with that, and they'll continue to exist. Monopoly making normal profits may use them for dynamic efficiency, जो कि basically long run innovation and cost reduction के लिए important है, and hence important for survival. However, firms can be wasteful and complacent
due to lack of competition. So abnormal profits may not be essential for survival. ठीक हो गया? So somewhere along this line, and then you can write your final conclusive statement. Something like that. In conclusion, supernormal profit is not always necessary for the continued existence of the firms. In perfect competition, firms only need normal profits in the long run to remain in operations. In monopoly, supernormal profits may persist due to barriers to entry and exit, encouraging investment and innovation, but it is not essential for survival, especially where obligations or social objectives uh, limits profits, right? So something along this line, and this would be your essay as a whole. So yeah, sort of remember you must write the conclusion also, which is a sum of the whole thing that we've sort of written and answering the question, is it essential? आपने बता दिया perfect competition में नहीं है essential. लॉन्ग रन के अंदर जो है आप वैसी नॉर्मल प्रॉफिट के साथ एग्जिस्ट कर सकते हो अनलाइक इन मोनोपोली ठीक हो गया सो समथिंग लाइक दिस यू आर सपोज टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर ऑलराइट मूविंग ऑन अब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मोनोपोली के साथ ठीक है now you gotta remember that there are इस topic के related a lot more questions ठीक है if we talk about just purely monopoly, there is another question that I can show you, and we can talk about that. जिसके अंदर they came up with a question, November 23 का है. Let me show you that question. It's sort of like one of the continuing question after this point. So let me go over that one also. I will have to download that. Just give me 1 second. Okay. So the question that you can, the year, you can write the year. The year is November 23, variant 43. November 23, variant 43. Okay. Let me open the question for you and then we can talk about it. It's question number 3. Yeah. So this is the question. Let's take a look at the question. So how would we go about a question like this? If you see on your screen, let me write the year for it. It is November 23, variant 43, question 3A. Evaluate the view that monopolistically competitive firms will always charge lower price and operate more efficiently than a than a monopoly firm. Now, how to go about this question? They can be, it's a very standard question. There are very easy marks up for grab. ठीक है जी आपने क्या करना है आपने बेसिक्स जो जो मैक्सिमम 10 मार्क 10 आउट ऑफ 20 तो जो उठाना है वो आपने उठाना है बेसिक कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करके
कुछ टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करके, जैसे इस केस के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू मस्ट टॉक अबाउट। ठीक है, इट्स अ मस्ट थिंग दैट देयर इज नो, मतलब इजी मार्क्स इज अप फॉर ग्रैब्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर there are many buyers and many sellers, but the sellers are relatively fewer than perfect competition, but a lot more than oligopolies and monopolies, right? दूसरी बात, जो प्रोडक्ट वो सेल करती है वो डिफरेंशिएटेड होता है। दैट मीन्स इट हैज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, but every seller has some sort of uniqueness, some sort of differentiation in their product। ठीक है, फिर उसके बाद there are low barriers to entry and exit। There are low barriers, that means there are not no barriers like perfect competition। perfect competition में तो we said free entry and exit है, इसमें लो बैरियर्स हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा फाइनेंशियल हो सकता है, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है, कोई छोटी मोटी ब्रांडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से कंपटीशन माइट बी sort of reluctant to maybe come into the market, but if they have a good reasonable plan, they will enter the market। शॉर्ट रन के अंदर what will happen and long run के अंदर what will happen to their profitabilities। ठीक है, now that is the key thing over here that we need to talk about। तो मोनोपोली के केस के अंदर यूजुअली आप शॉर्ट रन के अंदर जो है एब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमाते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, बिकॉज जब कंपटीशन या बैरियर्स कम होते हैं तो कंपटीशन कैन इजीली एंटर द मार्केट। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपने लिखनी है। फिर इन कॉन्ट्रास्ट यू हैव मोनोपोली। मोनोपोली के केस के अंदर भी आपने यही आर्ग्यूमेंट्स करनी है। मोनोपोली के केस के अंदर आपने क्या बात करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो यूनिक होता है, देयर इज ओनली सिंगल सेलर इन द मार्केट, या देयर इज हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, राइट? शॉर्ट रन हो के लॉन्ग रन हो, आप अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं, यू कैन मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, बट इन कंपैरिजन मोनोपोलिस्टिक के अंदर वी सेड द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, yeah, we said that there are many sellers, right? We said there are low barriers to entry, and we said short run के अंदर you may make abnormal profits, but आप long run के अंदर normal profit ही कमाते हैं। Okay, so these are one of the things that you need to talk about दोनों की। Question is about, will they always charge lower prices? So definitely you're making diagrams। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। Sort of, the reason why I've made these diagrams so roughly is, um, you have to do your proper diagrams anyways। The only thing that I want to show over here is कैसे monopolistic के अंदर you have much more elastic demand curve, and monopoly के अंदर you have much more inelastic, which can actually help us figure out that, see, they're charging a high price and they're relatively charging a low price because of the elasticity, because of a lot of substitutes available in the market। So monopolistic, because competition is there, they will not be able to charge such a very high price। But on the other hand, monopolies जो हैं, they can charge a lot on the higher side। ठीक है, but the question is, monopolistic firms will always charge lower prices, right? So this is what we're saying। Obviously, I can think of evaluation that that's not true। Sometimes the monopoly can charge even lower prices, क्योंकि उनकी एवरेज कॉस्ट, क्योंकि अगेन लार्ज स्केल क्वांटिटीज, राइट? अब मैं ये वाला अगर डायग्राम बनाऊं एवरेज कॉस्ट का, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जो मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म होती है
वो अपना LRAC का मिनिमम पॉइंट अचीव करती है यहाँ पर, लेकिन जो मोनोपोली है वो अपना LRAC अचीव करती है यहाँ पर। तो क्लियरली वी कैन सी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो एवरेज कॉस्ट है दैट्स ऑन द हायर साइड, और जो मोनोपोली का एवरेज कॉस्ट है दैट इज मच मोर ऑन द लोअर, which can allow them to charge much lower price comparatively। और फिर जब एफिशिएंसी की बात होगी तो प्लीज एफिशिएंसी का भी आप डायग्राम बनाएंगे। बाय द वे, दोनों एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होते हैं बिकॉज दोनों की प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट। दोनों के सिनेरियो में प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। और दोनों के केस के अंदर दे आर नेवर एट द मिनिमम रिच कॉस्ट, सो दे बोथ आर इनएफिशिएंट। ओके, we can't say that monopolistic competition is more uh, efficient in any way। ठीक है, दोनों ही inefficient हैं unless के objectives change हो जाएं। If they go for allocative efficiency, they might P equals to MC पे, तो obviously they will। तो ये आपका बेसिकली इसका एनालिसिस का पूरा पार्ट है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, वेयर वी कैन आर्ग्यू दैट यस, monopolistic competition do charges a lower prices in comparison to monopolies that charges a higher price because demand inelastic है, कोई competition नहीं है, तो they have the ability to charge a higher price। But then we want to make a counter argument also that monopolies dynamic efficiency उनको achieve होती है। They put their abnormal profits, क्योंकि remember monopolistic long run में तो abnormal profits नहीं कमा सकती, तो they don't have those extra funds for research and development, but monopolies do, which can enable them in future to lower their production costs and all। They do benefit from economies of scale, as we've mentioned over here। You can make this diagram and you can prove this। ठीक है, monopolistic firms will achieve allocative efficiency in the long run, but profit maximizing firms will not operate on the allocative efficiency. We've already talked about that. So I think as long as we're talking about both sides, and always की जो बात है, in conclusion, we're saying that it is not always true that monopolistic competition will always charge lower than monopoly। तो ये थोड़ा सा somewhere along this line, you can look at this year, you can look at the marking scheme, and you can construct an essay based on. I've given you the main relevant diagrams for the main discussion, and now it's up to you how you want to write this essay।